देखिए, हमारे पास 2 तरह के लोग आते हैं, जो फैमिली बिज़नेस ग्रुप के लोग भी आते हैं, अच्छा। बट जो बेटर है द यंग माइंड्स आते हैं। तो आई थिंक ऑफ 2 कोर्स। टाइप के जो ब्रीड है हम्म। इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड वी वांट देम टू कोएग्जिस्ट टुगेदर इन इंक्यूबेशन इकोसिस्टम। बिज़नेस भी होना ओके। चाहिए, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए, इम्पैक्ट भी आना चाहिए। You have more than 400 startups under your facility. On one side, किट का जो एजुकेशन साइड है that is much widely seen, पर जो incubator साइड है इस पे ज्यादा चर्चा नहीं हो रहा, तो why is that? What we said, let's work silently on the ground. We should be हम्म। always in action हम्म। and will not make much of noise in the media or somewhere else, right? इसमें हमें बेनिफिट मिला है ओके। बिकॉज जब आप इंक्यूबेशन की बात करते हैं, हमेशा पीपल टॉक अबाउट बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और दिल्ली, एंड वी हैव सेड वी विल वर्क इन भुवनेश्वर, आउट ऑफ भुवनेश्वर एंड फॉर द होल ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, और साइलेंटली काम करेंगे, जिसमें ज़्यादा मीडिया में नॉइज हम क्रिएट नहीं करेंगे। वैसे how many startups are in your portfolio currently and overall कितना valuation under management है आपके पोर्टफोलियो में? तो जब यहाँ पे कुछ था नहीं तभी हमने शुरू किया है 2010 में, एंड तब से लेकर अभी तक हमने 438 प्रिसाइजली हमने स्टार्टअप ओके। किया है। मोटा मोटी देखा जाए तो अभी 15,000 करोड़ की वैल्यूएशन कंपनी 18,000 करोड़ पे बन चुके होंगे, अमेजिंग। और उसमें ये जो कंपनी है 1400 करोड़ से ज़्यादा इन्होंने प्राइवेट इक्विटी फंड रेज किया है। द कंट्री रेस्पेक्ट्स अस फॉर दैट, रिकॉग्नाइजेस अस फॉर दैट आल्सो। My guest is someone who belongs to a service-based industry called as incubators. The role of incubators is to help startups at a very early stage. These are the bodies on which startups can trust because profit is not the only reason they operate. The success of an incubator is determined by the number of startups they help operate in the market. And to break down more about this, I have with me the CEO of KIIT Business Incubator, Dr. Mrutyunjay Suar. So hello sir, I welcome you to Trade Talk. थैंक यू। तो आप बैकग्राउंड से एक साइंटिस्ट रह चुके हैं पहले, एंड करेंटली यू आर हेडिंग किट बिजनेस इंक्यूबेटर एज द सीईओ. सो हाउ हैज बीन द ट्रांजिशन? देखिए, मैं तो एक प्रोफेसर रिसर्चर था एंड अभी भी हूँ, और ये मन में था कि जब भुवनेश्वर में कुछ करेंगे और किट में प्लेटफॉर्म मिला है, और हमने प्लान किया कि ऐसे एक सेंटर बनाएंगे जिसमें कि जो न्यू माइंड्स आते हैं आइडियाज़ लेके, उनको कैसे हम प्रोपेल करेंगे नेक्स्ट फेज के लिए। तो ये तो एक इंटरेस्टिंग फेज है, और आई कुड सी दैट दिस इज मच मोर रिवार्डिंग देन द जॉब ऑफ अ प्रोफेसर और अ रिसर्चर। तो इसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से जो आइडियाज़ को लेके नेक्स्ट स्टेज को जाते हैं। हर एक के पीछे साइंस बैकबोन होता है, टेक्नोलॉजी बैकबोन होता है। तो ये इंटरेस्टिंग जर्नी है जिसमें कि आप न्यू माइंड के साथ आप बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उनको आप हेल्प कर सकते हैं, जो आइडियाज़ लेके आते हैं उसको काम कर सकते हैं, और यू कैन टेक देम टू नेक्स्ट लेवल ऑफ एंटरप्राइज क्रिएशन। सो ये बड़ा एक्साइटिंग फेज ऑफ लाइफ। अगर हम देखें तो देर आर पीपल हु आर टू मच इनटू अ फॉर्मल एजुकेशन, जिन्होंने कायदे से सारी पढ़ाई की है, एंड एजुकेशन रिमेन्स द कोर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस. जैसे डॉक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, कि एजुकेशन कोर है उनके एग्जिस्टेंस से, कि यस, एजुकेशन यस। कभी खत्म नहीं होने वाला. एंड ऑन अ डिफरेंट साइड वी सी एंटरप्रेन्योर्स, जिनका एजुकेशन से उतना ही लेन देन होता है जितना उनको अपने व्यापार पे लगेगा, और रीडिंग के नाम पे मोस्टली इट इज सेल्फ हेल्प. एंड आपने मोस्टली दोनों एक्सप्लोर किया है यस। इन योर जर्नी. हाउ हैज इट बीन? आज आप जब देखते हैं नए स्टार्टअप्स को, नए एंटरप्रेन्योर्स को who come to the institution for help, so how do you see them? ये हमारे पास 2 तरह के लोग आते हैं, जो फैमिली बिज़नेस ग्रुप के लोग भी आते हैं, अच्छा. बट उससे बेहतर जो जो बेटर है द यंग माइंड्स आते हैं, दे डोंट हैव एनी बिज़नेस बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड कुछ है नहीं बिज़नेस में, बट दे हैव स्टडीड लॉट इन देयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग जगह स्टडी किया हो। उनके मन में कुछ आइडियाज़ आते हैं जो कि दे रियलाइज़ दिस इज़ ए बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी एंड इफ दे कैन सॉल्व इट, देयर इज़ ए कमर्शियल एंगल टू इट, एंड दे कम विथ इनोवेटिव माइंडसेट। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को साथ में लेके आते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, न्यू प्रोसेस को लेके आते हैं। सो ये दोनों में डिफरेंस है, बिकॉज द अदर ग्रुप दोज हु कम्स फ्रॉम द बिजनेस साइड, दे ऑल टॉक अबाउट मनी ऑलवेज, Of course. बिजनेस, मनी, Of course. ट्रांजेक्शंस, कमर्शियल्स। बट ये जो आते हैं दे ऑलवेज लुक एट इम्पैक्ट ऑल्सो एंड इनोवेशंस, इम्पैक्ट ऑफ कोर्स एट द बैकबोन, ऑल्सो बैकड्रॉप में कमर्शियल्स भी, अदरवाइज कैसे सस्टेन करेंगे। Of course. सो आई थिंक Of दो course. टाइप के जो ब्रीड है इम्पॉर्टेंट फॉर अस, एंड वी वांट देम टू कोएग्जिस्ट टुगेदर इन इंक्यूबेशन इकोसिस्टम। बिजनेस भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए, इम्पैक्ट भी आना चाहिए। Okay. अगर हम इंक्यूबेटर्स की बात करें तो एक ज़माने में इन द अर्ली 2000s इंडिया में कुछ 20 इंक्यूबेटर्स होंगे.
आज की डेट पे अगर हम देखें तो 650 से 700 इंक्यूबेटर्स है. Globally, India ranks third in terms of the number of incubators, which is understandable because India has the third largest education system globally. Considering most incubators जो है वो they are backed up by education institutes. अगर हम उड़ीसा की बात करें तो there are around 30 incubators. And I was going through your portfolio the other day, and it is quite impressive. You have more than 400 startups under your facility. And but एक चीज जो खटक रही है कि on one side किट का जो एजुकेशन साइड है that is much widely seen, पर जो इंक्यूबेटर साइड है इस पे ज्यादा चर्चा नहीं हो रहा. तो why is that? नहीं, ऐसे तो नहीं है। आपने जो बताया नंबर जो है बहुत बढ़ता जा रहा है। इंडिया इज सच ए ह्यूज कंट्री एंड 650-700 भी बहुत कम ही है। उसको और भी बड़ा करना है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को करने हैं। अगर बात करेंगे किट टीबीआई के बारे में, इट इज़ क्वाइट वेल नोन, बट इफ यू लुक एट द नंबर गेम, इफ यू लुक एट किट there are 40,000 students, so Of it's course, really well known of and course. big organizations, placement happens, good Mhm. academics happens. बट किट टीबीआई में बिकॉज बीइंग इन पार्ट ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, जैसे हम लोग अभी उड़ीसा में हैं, किट Mhm. टीबीआई Mhm. जनरली ज़्यादा लोग चर्चा नहीं करते हैं इंक्यूबेशन के ऊपर, Yes, बट yes. हमने साइलेंटली काम करना बिलीव किया है। Yes, you have been a silent Yes, yes, contributor to yes, the yes, yes. ecosystem. Because Yeah. इसमें क्या होता है कि if you what you want to achieve in life. So what we said, let's work silently on the ground. We should be Mhm. always in action Mhm. and will not make much of noise in the media or somewhere else, right? इसमें हमें बेनिफिट मिला है Okay. बिकॉज जब आप इंक्यूबेशन की बात करते हैं, हमेशा पीपल टॉक अबाउट बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और दिल्ली, Of course. and we have said we will work in Bhubaneswar, out of Bhubaneswar and for the whole east and northeast of India, Mhm. और साइलेंटली काम करेंगे। इसमें ज़्यादा मीडिया में नॉइज हम क्रिएट नहीं करेंगे। इसमें बेनिफिट ये मिला है कि जब Mhm. बिकॉज हम जब जाते हैं गवर्नमेंट हमें रियलाइज करता है कि दिस पीपल आर वर्किंग ऑन ग्राउंड, ट्रू Of course. सेंस। Of क्योंकि course. जो नंबर आपने बताया 650-700 इंक्यूबेटर बन रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको नेक्स्ट फेज पे लेके नहीं जा पाते Yeah. हैं बिकॉज मे बी दे डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग, दे डोंट हैव क्लैरिटी हाउ टू टेक इट। Mhm. So we have got that clarity by doing work silently Of course. and working with a lot of other institutions, Mhm. partnerships करके. Mhm. So it is known in the country. Just for your information, KIIT TBI is known in the country, in the top performing incubator in the country. बिल्कुल, Every बिल्कुल. ministry has supported us, and गवर्नमेंट सेक्टर्स में और ये सब जगहों में ऑफ कोर्स चर्चा है. लोकली अगर हम देखें तो दैट वाज माय एनीवेज यू yeah. यू रिस्पोंडेड. सो सो व्हाट इज द प्रोसेस इफ समवन हैज एन आइडिया? या तो वो बूटस्ट्रैप कर सकते हैं, या तो दे गो विद एन एंजल इन्वेस्टर, या तो वेंचर कैपिटल, या तो फिर वो इंक्यूबेटर के पास आ सकते हैं. तो व्हाट रोल डज एन इंक्यूबेटर प्ले, एंड व्हाट इज योर पोजीशनिंग कि आप किन टाइप ऑफ बिजनेस को सपोर्ट करते हैं? देखिए, हम लोग एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है, तो Mhm. जाहिर है कि इसमें हम लोग जिसमें टेक्नोलॉजी बैकबोन होगा उसको हम सपोर्ट करेंगे, जिसमें Mhm. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा, इनोवेशंस होगा, उसको हम Mhm. सपोर्ट करते हैं। Mhm. वी आर नॉट ए क्लासिकल बिजनेस इंक्यूबेटर कि कोई भी बिजनेस शुरू कर देंगे Of हम course. लोग। और हम लोग जनरली मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो ये Mhm. ओनली इंक्यूबेटर इन द कंट्री व्हिच ओनली प्रमोट्स मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी, जो इंडिया को ज़रूरत है अभी, और वो भी बिल्कुल, हम भुवनेश्वर में बैठ के करते हैं। नाउ बिल्कुल. इनक्यूबेटर एक्चुअल चीज़ क्या है? आपने सुना होगा कहावत में कि एक इनक्यूबेटर मतलब जो बच्चे का कुछ होता है, Yes. जन्म लेने के बाद उसको एक इनक्यूबेटर रखते हैं जहाँ पे परफेक्ट टेम्परेचर मिलता है, लाइट्स मिलता है, तो बच्चा अच्छे से बिहेव करता है। सिमिलरली एक आइडिया कभी आता है, मान लीजिए आप एक आइडिया लेके आएँगे, यू कम टू इनक्यूबेटर, लेट्स से टू किट टीबीआई। तो हम क्या Mhm. करते हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं उसमें, जो Mhm. एक्सपर्ट्स हैं, Mhm. विल फर्स्ट टॉक टू यू। दे लुक एट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज़ यू हैव, इसका Mhm. कितना दूर तक जा सकता है, Mhm. व्हाट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इट कैन हैव। सो एक इनक्यूबेटर जो है कंप्लीट इकोसिस्टम है, which is not just like a classroom or a Mhm. experimental laboratory. It Mhm. brings several expertise from business, problem statement, Mhm. technology development, ideations, Mhm. all sort of investments, all sort of people come into picture. They look at your idea from a 360-degree lens. They don't look at only a straight lens. समझ lens. गया. उसमें क्या होता है कि जो आप आइडिया लेके आते हो विद एंथुजियास्टिक आइडियाज, उसको हम बड़े रिफाइन करते हैं। इन द प्रोसेस आप ही बेटर कर पाएंगे। सो Of course. व्हेन समबडी कम्स टू अस, वी हेल्प देम टू गो टू नेक्स्ट लेवल ऑफ आइडिएशन, टू Mhm. बिल्ड ए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, और ए प्रोडक्ट बनाने के लिए हम उसको बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, बोलते हैं एमवीपी। Mhm. देन वी हेल्प यू टू क्रिएट एंटरप्राइज। तो ये जो Okay. पहले कैसे उनको बिल्ड करेंगे विथ स्ट्रॉन्ग बिल्कुल. फाउंडेशन प्रोडक्ट, Mhm. एंड प्रायोरिटाइजिंग द बिजनेस प्लान, उसके लिए इंक्यूबेटर काफ़ी अच्छे से उनको मेहनत Of course. का साथ में काम करता है।
अगर हम समझे तो ये इंक्यूबेटर्स चालू कैसे होते हैं? हु आर द की स्टेक होल्डर्स बिहाइंड दिस या बॉडी? सो इंक्यूबेटर एक जनरली सेक्शन 8 कंपनी होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होता है। हम्म। ये जनरली आजकल देखेंगे इंडिया में भी ना, जो मोस्टली एकेडमिक सेटअप में है, यस। यूनिवर्सिटी में है, इंस्टीट्यूशन में है। हम्म। तो होस्ट इंस्टीट्यूशन तो एक स्टेक होल्डर रहा, बिकॉज उनको आगे आना चाहिए। इसमें क्या है कि बिकॉज इफ दे कैन प्रमोट इंक्यूबेटर प्रॉपरली, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल कम अप विद एक्साइटिंग आइडियाज जो उसको ऑफ कोर्स। ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। नाउ स्टेक होल्डर इज होस्ट इंस्टीट्यूशन। सेकेंड, जब हम इंक्यूबेटर खोलते हैं, वी कैनॉट कॉल एवरीवन इज टीबीआई जस्ट टू बी सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। तो हम्म। इसमें एक पहला है, गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, उनका एक स्कीम है कॉल निधि स्कीम। ओके। Under this, we apply to the government and we show that this much space we have. We want to, create an incubator. हम्म। They give us a fund. So there are different schemes. So DST उसको support करता है, Government of India. Then BIRAC support करता है. Then MSME, Technology Development Board, several Government of India agencies सारे का stakeholders डिपार्टमेंट्स। हो जाते हैं. ओके। And they support you and they finance you for, bringing human resource to run the incubator, provide you finances to build prototypes. हम्म। ये सारे stakeholders बन जाते हैं and you'll be very नाइस। happy. Today's KIIT TBI is one of the center of excellence जिसमें सारे ministry support किए हैं and they are the biggest stakeholders in our journey. नेशनल एंड लोकल दोनों गवर्नमेंट दोनों का। दोनों स्टेट गवर्नमेंट भी होता है, हमारा स्टार्टअप उड़ीसा है, हम्म। इवन डिपार्टमेंट हम्म। ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा भी अभी बायोटेक पॉलिसी लाया है, उसके अंदर भी देव बायोटेक कंपनी को हम्म। प्रमोट कर रहे हैं। हम्म। सो इट टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दिस स्टेक होल्डर्स इन आवर इकोसिस्टम। ओके। ओके। पीपल वुड अज्यूम कि एज इट इज एन इंक्यूबेटर बेस्ड आउट ऑफ किट, तो ज्यादा बच्चे किट के होते होंगे, बट व्हाट इज द रियलिटी? एनी सॉर्ट ऑफ आइडिया यू कैन गिव अस? देखिए, इंस्टीट्यूशन जो किट है हमारा, उसमें जो किट टीबीआई है, इट्स नॉट दैट ओनली किट स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ इट। इफ यू लुक एट 430 odd startup company we have, यस। not more than 40 odd companies are from, they are only from KIT. Rest are all from outside. ओके। तो हमारे जो स्टार्टअप्स है, दे कम ऑल अक्रॉस इंडिया। अच्छा। बट हमने एक यूएसपी बनाया है दैट विल बी हम्म। फोकसिंग मेनली द पीपल फ्रॉम द इनोवेटर्स फ्रॉम द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। हम्म। लेकिन आप देखेंगे तो हमारे कोयम्बटूर से लेकर के श्रीनगर तक हमारे स्टार्टअप्स हैं। तो ये फाउंडर्स फिर क्या भुवनेश्वर आते हैं इन ऑर्डर टू ऑपरेट? लाइक हाउ डज इट यस, हैपन? सो जो हमारा पहला इंटरेक्शंस होता है, फाउंडर्स आते हैं, बातें करते हैं। ऑफ कोर्स मेनी ऑफ देम, अब सबको तो हम अंदर रख नहीं सकते हैं, ऑफ बिकॉज कोर्स। टू ऑफ कोर्स। होल्ड 400 कंपनीज यू नीड सच ह्यूमंगस स्पेस। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये बोथ फिजिकल इंक्यूबेशन एंड वर्चुअल इंक्यूबेशन। ओके ओके। सो जिनको हम जो आते हैं, बस बहुत पीरियडिकल हम उसको मेंटरिंग करते हैं। हम्म। एवरी 3 मंथ 6 मंथ्स वी मीट देम, कॉल देम फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड सो मोर और लेस अभी हमारे पास 85 इन हाउस फिजिकल इंक्यूबेटी है ओके, इन द इन द फैसिलिटी। फैसिलिटी, ओके। बिकॉज उतना ही हमारा मैक्सिमम ऑफ 90 कोर्स। 100 कर ऑफ सकते हैं। कोर्स। बाकी लोग वर्चुअल हम उनके साथ और डिस्कस ऑल करते हैं। इंडिया से ये कनेक्टेड यस है यस, ऑल इंडिया से आपके बिल्कुल। साथ? ओके। टेल अस अबाउट द जर्नी ऑफ अ स्टार्टअप वंस इट एंटर्स योर इंक्यूबेटर, कि किसी ने एप्लीकेशन डाला और वो एंटर कर गए, ठीक है, व्हाट आर द अपकमिंग स्टेप्स? सो अगर आप एक कोई इनोवेटिव स्टार्टअप से हमारे यहाँ पे एंटर करता है एंड देयर इज अ प्रोसेस टू टेक द पर्सन इन, once he or she is in, we provide them some space, and the space could be office space, the laboratory space. So this is what he or she gets. हम्म। Beyond that, they get a support from the mentors. So mentors उनसे हम जोड़ देते हैं, जिसको हम हम्म। डायग्नोस्टिक पैनल कहते हैं। उसमें आपके बिजनेस के लोग होते हैं, टेक्नोलॉजी के लोग होते हैं, आईपी के लोग होते हैं। हम्म। दे बेसिकली वर्क विद दिस स्टार्टअप्स। ओके। उसके अलावा हम उसको फिर लाते हैं कि अगर बंदा अच्छा है, उसको हम बोलते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेस यू वांट। सो ही और शी सेज आई नीड सम फाइनेंशियल, सो वी आल्सो प्रोवाइड एक्सेस टू फेलोशिप्स फॉर इनोवेशन फेलोशिप हम्म। प्रोग्राम, जिसमें उसको 30,000 से 50,000 महीने पर मंथ फेलोशिप मिल तीस सकती है, हजार जितने मिल सकता मिनिमम। है, हाँ, मिनिमम उतना एंड देयर मिल इज समथिंग सकता है। कॉल्ड शिफ्ट फेलोशिप व्हिच यू प्रोवाइड 50 रुपीज पर मंथ फेलोशिप, 50,000 पर मंथ मिल पर मंथ सकता है मिल उसमें। सकता है। तो अच्छा है, बिकॉज उसको कुछ बिल्कुल मिल गया बिल्कुल। है। एंड देन ऑल्सो प्रोवाइड सम प्रोटोटाइपिंग ग्रांट। ओके। वो शायद 7-10 लाख से लेकर के हम 50 लाख तक ग्रांट दे सकते हैं। ओके, तो टू बिल्ड द प्रोडक्ट एंड टू बिल्ड अ एवरीथिंग। प्रोडक्ट, अर्ली स्टेज ओके। प्रोडक्ट, सो यस। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए। ओके। ना ओके। सोचिए, ये 50 लाख जो ग्रांट है, ये जैसे ऐसा कोई इन्वेस्टर देगा नहीं ऑफ कोर्स आपको। ऑफ इन्वेस्टर कोर्स। लुक्स एट द इन्वेस्टमेंट फेज, ग्रोथ बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। इसमें जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करने के लिए इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड लॉट ऑफ रिसोर्सेज थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स। तो बिल्कुल। हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, डीएसटी, बायरैक, डीबीटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हम्म। सब लोग ये फंडिंग करते हैं हमें। वी आर ओके। द सेंटर ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस ओके। टू फाइंड आउट गुड स्टार्टअप्स। सो जो हम्म। हमारे, जैसे आप मान मान लेंगे 400 के करीब हमारे स्टार्टअप हैं, 430 के करीब। हम्म। उनमें से कम 350 400 को फुल
कहीं ना कहीं से फंडिंग मिला होगा। ओके। 10 लाख से लेकर 50 लाख ग्रांट, उसके अलावा और भी कुछ ग्रांट मिल सकता है, CSR फंडिंग कर सकते हैं। हम्म। तो ये जो स्टार्टअप्स हमारे अंदर आते हैं, इनको भी हम एक्सेस देते हैं CSR फंडिंग के लिए। हम्म। I told you that many of the startups, they build products which have social impact, यस यस। and they can also get several CSR support. ओके। So imagine mentoring, space, all sort of इट्स things, and क्रेजी। also financial resources provide them. The person should not think much about where do I get money now, because the parents will not give so ऑफ much of कोर्स। money. The investor will never give such money at this early बिल्कुल, stage of ये development. शुरुआत स्टेज ये में कौन। शुरुआत स्टेज में इनक्यूबेटर्स करते हैं, और KTBI काफ़ी पॉपुलर है बिकॉज सारे गवर्नमेंट एजेंसी का फंड हमारे पास होता है। तो हम लोग एक टॉप परफॉर्मर इनक्यूबेटर ऑफ इंडिया में माने जाते हैं। आपको वैसे आप तो काफी देखते होंगे, बट हाउ इज उड़ीसा डूइंग इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? क्योंकि मोस्ट एक्शन क्या हम सिर्फ भुवनेश्वर में देख रहे हैं, अगर हम उड़ीसा की बात करें, कैसा लग रहा है इकोसिस्टम मार्केट में करेंटली आपको? नहीं, देखेंगे तो हमेशा हेडक्वार्टर में नॉइज होता है, ऑफ कोर्स। बट आप देखेंगे जो इनोवेटर्स आते हैं, दे कम फ्रॉम ऑल अक्रॉस द स्टेट। तो हम्म। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है, संबलपुर के काफ़ी अच्छे स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं, IG ड्रोन से कंपनी है। सिमिलरली बालासोर के, बरमपुर के, हर जगह से, ओके मयूरभंज के, कंधमाल के ओके। लोग आ रहे हैं, कलाहांडी के लोग आ रहे हैं। अच्छा। They are doing good, but they are stationed now in Bhubaneswar. हम्म। That's why you hear noise from Bhubaneswar. लेकिन जो हम्म। इनोवेटिव माइंड्स ना हर तरफ से आ रहे हैं, इवन फ्रॉम ए वेरी ग्रास रूट लेवल से टियर लेकर थ्री के। सिटीज विलेजेस से भी यू आर यस यस गेटिंग। यस, वहाँ से भी आते हैं। ओके। और जैसे अब उड़ीसा, आप बताए उड़ीसा कैसे कर रहा है। इफ आई लुक एट फ्यू इयर्स बैक, टुडे उड़ीसा इज डूइंग गुड एंड ग्रेट, बिकॉज अभी गवर्नमेंट, जैसे आपने स्टार्टअप हब देखा है, हम्म। उनका स्टार्टअप पॉलिसी है MSME डिपार्टमेंट का। उसके अलावा दे आर सपोर्टिंग सेवरल इंक्यूबेटर्स इन द स्टेट, और ये ग्रो कर रहा है। बट अभी स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन इन येट टू उड़ीसा, हैपन। इट्स रियली डूइंग गुड एट द मोमेंट। सो वैसे हाउ मेनी स्टार्टअप्स आर इन योर पोर्टफोलियो करेंटली, एंड ओवरऑल कितना वैल्यूएशन अंडर मैनेजमेंट है आपके पोर्टफोलियो में? देखिए, मैं गिव ए वेरी क्लियर पिक्चर। सो फार हमने 2010 को स्टार्ट किया इंक्यूबेटर विद द ओके। सपोर्ट फ्रॉम द DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड उसके बाद से हमने भी सीखा कि बिकॉज हम्म। उड़ीसा वाज ए न्यू प्लेस टू ऑफ प्रमोट कोर्स ऑफ स्टार्टअप, कोर्स। एंड नोबडी वाज टॉकिंग गुड अबाउट इट कि उड़ीसा में स्टार्टअप्स हो सकता है। हम्म। तो जब यहाँ पे कुछ था नहीं, तभी हमने शुरू किया 2010 में। एंड तब से लेकर अभी तक हमने 438 प्रिसाइजली हमने स्टार्टअप ओके। किया है। और आपको पता होना चाहिए, दिस इज द रूल दैट ओनली 10% सक्सीड, दैट्स द ऑफ कोर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ऑफ कोर्स। बट हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे कंपनी अभी भी जिंदा हैं, बिकॉज दे आर हम्म। परफॉर्मिंग, दे माइट नॉट ग्रो एक्सपोनेंशियली, बट दे हम्म। परफॉर्मिंग वेल। सो मोटा मोटी देखा जाए तो अभी टोटल वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी, बिकॉज उसमें से बहुत सारे लोग बंद कर चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। 15,000 करोड़ की वैल्यूएशन कंपनी, 18,000 करोड़ पे बन चुके होंगे। अमेजिंग। और उसमें ये जो कंपनी है, 1400 करोड़ से ज़्यादा इन्होंने प्राइवेट इक्विटी फंड रेज किया है, विच ओके। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल ये की आप बात कर रहे ओवरऑल हैं? की बात है, तो ओके। गवर्नमेंट का फंड छोड़ दीजिए, हाँ। ये जो प्राइवेट इक्विटी फंड है, एंजल समझ। फंड है, VC फंड है, 1400 करोड़ से लेकर 1500 रेज किया, विच इज़ नॉट अमेजिंग। नॉट स्मॉल नंबर। ऑफ कोर्स सो ऑफ ये कोर्स। चीज़ हमारा है, और ये काफ़ी द कंट्री रेस्पेक्ट्स अस फॉर दैट, रिकॉग्नाइजेस अस फॉर दैट हम्म। आल्सो। अगर हम देखें तो आप नॉर्थ ईस्ट में भी काफी चीजें कर रहे हैं, एंड नॉर्थ ईस्ट, इफ आई सी दैट इट इज आल्सो एन इमर्जिंग इकोनॉमी, द लिटरेसी रेट्स आर ग्रोइंग, बट अगेन स्टूडेंट माइग्रेशन बिकम्स अ की प्रॉब्लम। तो व्हाट आर यू गाइस डूइंग देयर, एंड क्या इनिशिएटिव्स वहां पे ले रहे हैं ताकि स्किल डेवलपमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट मिल सके? तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया KTBI, विच वाज पीपल आर सेइंग कि इन ओडिशा में भी स्टार्टअप हम्म। culture may not be possible, but we made it possible. हम्म। And we got the best practices. So what we realized, let's take these best practices to help other states of East and North, especially Northeast states. तो द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बायोटेक ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमें सपोर्ट करता है, दे हैव गिवन अस अ सेंटर कॉल्ड रीजनल सेंटर टू ओके। प्रमोट टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। So under that, we went to the northeast states and eastern state, talked to them. No, surprisingly, the people are very good, but they don't have the platform to take their ideas to the next level. तो हमने बोला यही तो हमारा चैलेंज था इन उड़ीसा में, जो बिल्कुल। अभी अपॉर्चुनिटी बन गया है। Why don't we replicate those model in the states? बस मैं आपको बताऊं कि हम लोग अपना इंफ्रा वहाँ नहीं बना रहे। It's not KIIT TBI. We ओके are helping state government to set up innovation hubs in the states, which is ओके। implemented by KIIT TBI, but not its KIIT TBIs. You understood, अच्छा, right? So it's not, हम लोग अपना नहीं बना अपनी फैसिलिटी नहीं चालू रहे, नहीं करे, चालू बट कर यू आर हेल्पिंग द रहे। Yes, गवर्नमेंट सेट yes, अप yes, yes. फैसिलिटीज एंड सेट अप मॉडल्स इन इसमें एक प्लेस। पीछे है, because you should not put your things everywhere.
Of course. You should be a generous player. You should be an enabler. Yes, we went to meet the secretary, chief secretary, and other government officials, including the minister. Mm-hmm. एंड फर्स्ट हमारा शुरू हुआ मणिपुर में, इट्स कॉल्ड मणिपुर टेक Okay. इनोवेशन हब, जो Mm-hmm. बायरेक रिकॉग्नाइज करता है हमें। तो स्टेट गवर्नमेंट जो डीआईटी है, उनका डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, Mm-hmm. उन्होंने हमें स्पेस दिया है, 10-10 स्क्वायर फीट स्पेस दिया है, Mm-hmm. और हमारे वहाँ पे टीम है, वहाँ पे काम कर रहा है। मणिपुर और में. मणिपुर में, एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज, इवन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट गिव्स अस सम मनी टू रन इट, Mm-hmm. एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज दैट रिसेंटली यू हैड सेवरल प्रोग्राम्स, 25 स्टार्टअप्स को हमने वहाँ सिलेक्ट किया है, Okay. और ईच 50 लाख दिया गया है। And this is Crazy. Bayrek has given, and Bayrek said these are very interesting coming out. So मैं ये बोलना है कि platforms are not there, so we're creating their platform. So और काफी मणिपुर लोकल एंटरप्रेन्योरशिप, वहाँ काफी लोगों को सपोर्ट मिलेगा ये सपोर्ट चीज मिलेगा। से. तो ये तो है, हम वहाँ पे बड़े सारे प्रोग्राम्स करते Mm-hmm. हैं, और उनमें से देखा गया कि बहुत सारे ऑलमोस्ट 150 वुमेन को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, जो वुमेन Okay. एंटरप्रेन्योर्स। तो ये चलता रहेगा। रिसेंटली अभी त्रिपुरा के साथ बात चल रहा है, Mm-hmm. अभी त्रिपुरा हब बनेगा, ट्राई हब बनेगा वहाँ पे, वो Mm-hmm. भी हम लोग शुरू करेंगे, और उनके लिए Mm-hmm. करेंगे, उनका होगा। हम उनको Mm-hmm. 3-5 साल के लिए हेल्प करेंगे। जब उनका क्रिटिकल मास बिल्ट हो जाएगा, दे आर वेल ऑफ, विल विथड्रॉ आवरसेल्फ, एंड फॉर अस देयर इज नो विथड्रॉल सिम्पटम्स, वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके. ओके. ऐसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आपने मेंशन किया, उड़ीसा में भी वी आर हियरिंग अ लॉट ऑफ नॉइस विद वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आप क्या देख रहे चेंजेस हाँ, नहीं, डेफिनेटली women from Odisha now becoming पार्टिसिपेशन के फॉर्म में? enterprising, हम्म. participating. At least they're having several events in the different places. हम्म. But still, lot to be done in this space, and हम्म. I see in noise, but there are a lot of things to be done on the ground. हम्म. उड़ीसा काफ़ी अच्छा कर रहा है, हम्म. लेकिन उसमें और भी अच्छे हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल. इसलिए नया स्कीम्स भी आ रहा है, हम्म. स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्टिंग टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। हम्म. बट मोटा मोटी देखा जाए तो स्टेट अभी अच्छा कर रहा है इन स्टार्टअप्स, वेरी स्पेशली वुमेन वेरी. एंटरप्रेन्योर्स। तो अगर मैं किट इंक्यूबेटर्स के बारे में समझूं, तो यू गाइस एक्ट एज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स कम एडवाइजर्स rather than a financial investor जिनका एक मेजर पैसा बनाने का मोटिव होता है. And as we know that startups at an initial phase can be a havoc to get into, and you help them with so many things like legal, tech, registrations, capital, grants, etc., etc. So what financial model do you get in with the startups in order to help them do so? सो यू हैव डिफरेंट मॉडल्स, Mm-hmm. बिकॉज हम भी अपने आप को एक स्टार्टअप की तरह सोचते हैं, बिकॉज Mm-hmm. इफ यू डोंट grow with our growth plan, we will not be sustainable. बिल्कुल. We cannot do बिल्कुल. philanthropy work. बिल्कुल. And the background is a Section 8 company, not for profit, but still we make money to sustain ourselves. Mm-hmm. Mm-hmm. So जब आप स्टार्टअप्स आता है हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं। सो ये भी सक्सेस फी, सो इंक्यूबेशन मॉडल, Mm-hmm. इंक्यूबेशन चार्जेस लेते हैं, सक्सेस फी ऑफ एनी ट्रांजेक्शन्स लेते हैं, Mm-hmm. थर्ड आपका इक्विटी लेते हैं उसमें से, Okay. तो सॉफ्ट लोन भी लेते हैं। सो इंटरेस्ट, सॉफ्ट लोन, ये इक्विटी मॉडल, ये Mm-hmm. सक्सेस फी, ऑल दिस आर पार्ट ऑफ आवर Okay. इक्विटी बिजनेस समझे मॉडल। तो कितनी परसेंट होगी करीबन? डिपेंड करता है कौन सा Mm-hmm. स्टेज में स्टार्टअप है, और उसमें से कितना पैसे हम लोग लगा रहे हैं, Mm-hmm. और कौन से फेज पे है। Mm-hmm. मोर और लेस हमारा जो है 2 to 5% मैक्सिमम हम लेते हैं, Okay. ताकि द स्टार्टअप शुड नॉट ब्लीड इन Of फ्यूचर टू course. रेज मोर इन्वेस्टमेंट। Of course. Of course. So, how many applications do you see currently public की तरफ से via website and portals? कितने applications आप देखते हैं, and कितने परसेंट के साथ आप आगे बढ़ते हैं? Applications तो कुछ भी आ सकती है, या पर what is the number and कितने परसेंट के साथ आप आगे बढ़ते हैं? से नंबर तो नहीं, मोटा में देखा जाए, जैसे हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, सो वी ऑलवेज गैदर्ड startups applications every month. We organize meetings. Mm-hmm. In the meeting, let's say we get around 100 applications, and internal screening committee will say कि no, they discuss and they say okay, out of 100 maybe 30 needs to be called for presentation or discussions. Okay. Out of the 30 maybe we pick up 4 to 5. This is average. So it's not number, but always you go Mm-hmm. by the quality. So Of you can course. say sometimes out of 100 we pick up 3 4, Mm-hmm. sometimes out of 100 we pick up maybe 7 10, like this. So it's a Depends. 10% maximum. The ones you reject, the applications which you reject, what are the main reasons you see कि आप क्यों reject करते हैं, कि क्या ऐसा गलती आप देखते हैं applications में that you reject? What are the common errors that you see in an Good application? question. So आप देखेंगे people are very copy paste and they're very casual in approach. So they want to be CEO the first day of a company without knowing what it is lead to. Mhm. So हमें से वेरी बेसिक चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिसिंग रहता है कि Mhm. टीम में क्या है, रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है,
What is your, the unmet need you are addressing? Mm-hmm. What are the problem statements you are addressing? Who are your team members? How much Mm-hmm. work you have done so far? What has been done by others in this sector? What Mm-hmm. is the USP, competitiveness? ये पूरा स्ट्रक्चर वो स्टडी नहीं करते, Market study and ये everything. बिल्कुल नहीं करते. Many of them, I think I can tell you 95%. 95%. They That's great. always, apply just for the sake of apply, and it's very irritating sometimes because number so many Mm-hmm. coming to us, we see Mm-hmm. they are not. So it groom them. Mm-hmm. That's why you provide several platforms where you groom them. How do you apply? What should be reflected in the applications? So this is what I think. Most of them are very casual. I can tell you, they Mm-hmm. don't understand that enterprise is not of individual's business. It's a team business, Of course. and they don't talk about team. They don't talk about the problem statement. Just आते हैं कुछ भी बोल देते हैं कि हम इसमें बिजनेस कर लेंगे और इसका Mm-hmm. मल्टी बिलियन टर्नओवर हो सकता है. हमेशा नंबर में बोलते हैं विदाउट नोइंग द ग्राउंड रिलेटेड. सो ये आपको चीज थोड़ा इरिटेशन भी होता है कि आपका एक डेफिनेटली. बैकग्राउंड एजुकेशन साइंस का रहा है और यहाँ पे यू लिसन Oh टू yes, रैंडम oh नंबर्स. yes. If the numbers are not realistic, you get very irritated. Have you come across cases in your portfolio where a startup had to pivot? A pivot is when startup को या तो अपनी टारगेट मार्केट चेंज करनी होगी या अपने प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ ऐसे बदलाव लाने होंगे in order to meet the market needs. This happens because of the lack of product market fit or the change in market trends. वैसे तो हर किसी को अपना ओरिजिनल आइडिया ही परस्यू करना होता है, but once they are at the mercy of market, then only they know what will happen. So how has been your experience with this thing? So पहले पहले हमारे ये बड़े सारे learnings थे. Initially when we also started incubator, companies came to us, started building exciting products. Mm-hmm. They are not that moment fit for the market. Mm-hmm. So they really have to pivot. And there are Mm-hmm. many examples. बट हमने रियलाइज किया कि अगर हम उसको थोड़ा स्ट्रेटेजिक करेंगे, स्ट्रक्चर Mm-hmm. प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, उनको अगर ट्रेन करेंगे Mm-hmm. और उनको एक्सरसाइज बिल्ड करेंगे कि इसके थ्रू जाओ तो आपका थोड़ा पिवटिंग वाला नहीं होगा. Mm-hmm. तो उस केस में हम दिखाएगा अभी तो हमारे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बट देयर आर मेनी एग्जांपल्स वेयर because startups are very enthusiastic about their ideas. They Of don't course. look at market, variation. They don't look at. They बिल्कुल. keep on developing new products. बिल्कुल. तो उसमें से जब वो मार्केट लेके जाते हैं, that product was not fit for the market that time, or maybe Mm-hmm. that time it was not matured for them. I've बिल्कुल. seen one example. One company was building something for Indian market, Mm-hmm. AR/VR platform, and literally such an interesting product, and it was never took off in India. Somebody came from Germany in Mm-hmm. that time for some other business. He saw this product is developed in KIIT TBIs. I'll not name the company. So this company was taken by the German guy to Berlin, to Germany. They're doing very good for a racing club, the Okay. AR/VR platform. Just imagine, interesting क्या for प्रोडक्ट Germany. मार्केट फिट है Fit. बताइए. तो ये मैपिंग भी वो नहीं कर पाते. ऑफकोर्स Mm-hmm. हमें भी करना चाहिए. उस टाइम में हमारे भी उतना मैच्योरिटी नहीं था कि हम उनको जर्मनी तक ले जाएंगे. लकीली Mm-hmm. somebody came from Germany for some other things he saw. That's why I always tell Incubate is a very nice platform क्योंकि Of बहुत course. सारे लोग डेली आते हैं. जर्मनी से वो बेचारे स्टार्टअप का कनेक्ट हो गया तो बताइए. आगे तो देखिए वो किसके लिए आए थे, उनको साथ मिल गए. अभी जैसे कल भी Mm-hmm. हमारे यहाँ पे 15-20 लोग यूके के लोग आ रहे हैं, तो वो भी देखेंगे Okay. स्टार्टअप्स को. ये चीज चलता रहता है इंक्यूबेशन सेंटर्स अच्छा रिप्रेजेंटेशन में. मिल यस जाता है, यस अच्छा यस प्लेटफॉर्म यस मिल यस. जाता है बच्चों को. So, according to government schemes, which are the sectoral areas that government is focusing that the budding entrepreneurs can, look up to? Government schemes के हिसाब से which are the sectors that entrepreneurs should या look? देखिए गवर्नमेंट का तो जैसे हम लोग काफ़ी पॉपुलर है, बायोटेक का स्कीम है, कल बायोटेक स्कीम है, बड़े अच्छे से लोग सपोर्ट करते हैं. Mm-hmm. और उसमें से हम लोग अभी कम कम से कम 230 स्टार्टअप को हम प्रमोट कर चुके हैं, ईच 50 लाख ग्रांट देके. Okay. तो बायोटेक एरिया इज ए वेरी प्रोमिजिंग. Biotech में. बायोटेक्नोलॉजी, Okay. सेमीकंडक्टर्स इज अ वेरी गुड एरिया. ये भी अभी नया ही शायद स्कीम यस यस, निकलेगी. नया Yes. शुरू हुआ है. Mm-hmm. अभी एक नया शुरू होने वाला है एआई मिशन प्रोग्राम, Okay. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. It's a उसमें need भी of काफ़ी ours. सपोर्ट मिलेगा. उसमें एमएसएच है, मेटी स्टार्टअप हब है, Mm-hmm. मिनिस्टर ऑफ आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो भी इसमें ज़्यादा रोल प्ले करेंगे. Very nice. Apart from that, other fields are there. I think if you are into waste to wealth areas, clean energy, green energy sectors में आपको काफ़ी सपोर्ट्स मिलेंगे. Mm-hmm. Lot of funds coming from different ministries. Mm-hmm. एक क्वेश्चन जो आता है दिमाग में कि हाउ कैन उड़ीसा बी द हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग? अगर हम स्टार्टअप्स देखें जो कि मैन्युफैक्चरिंग में फोकस कर रहे हैं, हाउ कैन उड़ीसा बी अ हब फॉर दिस? अगर हमें अपने आप का स्ट्रेंथ को पहले पहचानना पड़ेगा. सो व्हाट आई रियलाइज्ड कि इफ यू रियली ओडिशा वांट्स टू बी इन द मेन forefront in the manufacturing, of course one is mining sector is there, which is not, it's little processing, but the next could be blue economy.
So using marine बिल्कुल. ecosystem, how can you create manufacturing enterprises Mm-hmm. and a lot of potential. I think Odisha could be the launchpad for blue economy Blue based economy. Yes. ventures. Second, of course, government is pushing now semiconductors. They are talking about it, which I Mm-hmm. don't know much about it. Mm-hmm. This will be one of the area. Third thing is industrial biotechnology. These sectors also, I feel a lot of things can happen. Odisha Mm-hmm. has potential. Apart from that, agricultural sectors, because we do not do much of agri processing. We're always trading. Mm-hmm. Now, can you build processing industries? Mm-hmm. Odisha could be the leader in this. Of So course. these space are there. Apart from that, if you ask me what the other sectors, it could be a little bit of industrial chemicals, Mm-hmm. and because they are very important. These are To new things I'm new hearing. things, yes. So Yeah. it's coming up, and we should really take lead, and government can support establishment such kind of SCZ zones Mm-hmm. to promote startups and the industries in the Odisha. I think Odisha has the best part is that it's very balanced state, balanced resources, and very down to earth people. बिल्कुल. And these days they are enterprising people, Mm-hmm. enthusiastic people, and they are simple, humble, and grounded. So if you really want to make something here, you bring a policy, you bring the critical mass, and things will happen in Odisha. बिल्कुल, Yes, बिल्कुल. yes. तो ये सारे जो सेक्टर्स आपने बोले वी कैन कंसिडर एज टॉप पोटेंशियल और टॉप इमर्जिंग सेक्टर्स. व्हाट आर द सेक्टर्स दैट आर क्राउडेड अकॉर्डिंग टू यू? जैसा आप भी काफी बच्चों को एनकाउंटर करते होंगे जिनको जैसे F&B इज अ Mhm. कैटेगरी दैट इज अ वेरी क्राउडेड स्पेस कि या तो आज के डेट पे या तो किसी को क्लब खोलना है या तो क्लाउड किचन. तो आपके यहाँ भी काफी एग्जांपल्स होंगे ऑफ सिमिलर थिंग्स. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? We are not a बिजनेस इंक्यूबेटर, हाँ, और हाँ, हाँ. क्लाउड किचन खोलना है उनको इंक्यूबेट क्या आने की जरूरत भी नहीं है. तो हमारे यहाँ पे जनरली ई Mhm. कॉमर्स आईटी, सो जो ई कॉमर्स आईटी क्लाउड किचन, या आप वो आएंगे सर मैं ऐसे कुछ बना दूं ऐप वगैरह सब कुछ Mhm. ऐसे मिल जाएगा. वी नेवर promote such kind of things. I'm Mhm. not against it, but Mhm. KTBI purposefully to build the USP said we will not promote such kind of बट IT e-commerce platforms. जनरली अगर हम देखें, अगर हम किट टीबीआई के अंदर बात ना करें, अगर हम आउटसाइड मार्केट देखें, तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द टॉप Yes. क्राउडेड सेक्टर्स? कौन से सेक्टर्स आपको क्राउडेड लगता है? Yeah, definitely, F&B is the top crowded one. The IT, the e-commerce platform, everybody's into e-commerce business platform creating that, and in different sectors. So ये बड़ा crowded है. Every I think one in two maybe talks about like these sectors, Mhm. and but creativity things are missing there. So I think very generic business plans people are talking about, Mhm. and classical business plans, and so e-commerce, IT, some services. In fact, the different app development companies, they restrict to only this many things. Beyond this, to develop interesting, exciting things are Mhm. missing probably in the Of ecosystem. of course. Can incubators be seen as the next platform for potential angel investors to get into? What are your thoughts on Definitely, this? definitely, because if you look at now, all investors they reach out to us. Last week we had a big investor connect program, Mhm. and 14 investors came to us, and there are already six, seven of companies got some sort of commitment. Mhm. Now, incubators are the breeding ground for next gen बिल्कुल. companies, and their angels investors will come and invest in स्टार्टअप्स अपने आप में इतने अनऑर्गेनाइज रहते कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स टू गेट इनटू, बट yes वाया इंक्यूबेटर्स दे कैन. incubators, because हमारे पास भी अपने टीम है, डिलिजेंस टीम है. बिल्कुल, बिल्कुल, वो बता सकते हैं आपको भाई कोई इतने मैच्योरिटी लेवल है, ये स्टार्टअप का हो गया है, बिल्कुल. and they've got so much of pre series funding already. So हम्म. what stage, so we understand the investors language. We बिल्कुल. always work as per the investors, what you call the mandate also. So they find हम्म. incubate is a very good place to look for their investments portfolios. अमेजिंग, अमेजिंग. ऐसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बीसीकेआईसी? मैंने भी मेंशन भी किया था, व्हाट इज बीसीकेआईसी एंड व्हाट डू दे डू? Yeah. So BCKIC stands for Bhubaneswar City Knowledge Innovation Cluster Foundation. ओके. It's a not-for-profit organization हम्म. which is an initiative of the Office of the Principal Scientific Advisor to Government of India. जो पहले ओके. अब्दुल कलाम जी थे, ओके. अभी प्रोफेसर ए के सूद हैं, the Principal Scientific Advisor, who advise honorable the Government of India on several science things. हम्म. Now अभी 7 clusters बना है इंडिया में. हम्म. भुवनेश्वर is one of them. तो जिसमें मैं चेयरमैन हूँ. उसका काम है कि जो आप देख रहे हैं कि स्टार्टअप टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहे हैं टू ए लेवल of हम्म. TRLs called technology readiness level. हम्म. Now beyond certain level, they are not going to next phase. Now how
BCKIC can come and help these Mhm. startups for technology deployment, piloting, validation kind of things. Mhm. We can also build country to country partnership. अभी BCKIC ने यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप बनाया था, जिसमें Mhm. कि कम से कम 25-30 लोग यूके से आए थे on the theme of critical minerals materials. Mhm. And both countries, companies, developer, innovators, they all discuss कि हम नया चीज कैसे ला सकते हैं इन द फील्ड ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स. तो ये Amazing. जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, कंट्री टू कंट्री पार्टनरशिप्स, टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट फॉर स्टार्टअप, ये Mhm. इनक्यूबेटर नहीं कर सकता है Okay. बिकॉज लिमिटेड है उसमें. Of course. तो ये सिटी क्लस्टर व्हिच is a umbrella structure under which let's say we have organizations from Odisha, IIT, IMMT, CPET all come under that. Mhm. गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा भी उसके साथ में है, Mhm. इंडस्ट्रीज लाइक नालको, टाटा आल्सो विद देम. तो ये एक होलिस्टिक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है जो कि ये स्टार्टअप्स को नेक्स्ट फेज तक लेके जा सकता है इन Nice. टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट. Nice. और एक इंटरेस्टिंग बताऊँ आपको मैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री जो होते हैं, जैसे टाटा, जिंदल्स एंड वेदांत, Mhm. दे हैव सेवरल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. दे वांट Okay. सॉल्यूशन, दे डोंट वांट टू सॉल्व इट. Mhm. सो सिटी क्लस्टर क्या करते हैं, इनके पास पहुंचता है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करता है, Mhm. ब्रिंग इंक्यूबेटर्स कनेक्ट प्रोग्राम एंड फाइंड करते हैं कौन कौन इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ये जो Amazing. कनेक्टिंग लिंकेज पहले मिसिंग था, इंडस्ट्री और पब्लिक के इंडस्ट्री, बीच का जो. इंक्यूबेटर, एकेडमिया, तो हम्म. ये सिटी क्लस्टर इज गोइंग टू सॉल्व इट, गोइंग टू रिजॉल्व इट, और ये कर भी रहा है. एंड Amazing. बीसीकेआईसी जो भुवनेश्वर है, इसमें हमारे अच्छे टीम है एंड दे आर डूइंग गुड एंड वी आर मच मोर एंटरप्राइजिंग सिटी क्लस्टर. हम्म. अभी डिफरेंट नॉर्थ ईस्ट में भी जाके इसका भी कुछ काम वहाँ पे भी कर रहे नॉर्थ हैं. ईस्ट में भी. यस यस. अमेजिंग. तो वैसे हम इंक्यूबेटर्स पे अगर आए तो हाउ कैन वी मेजर द सक्सेस रेट ऑफ एन इंक्यूबेटर? अगर हम डिफरेंट इंक्यूबेटर्स को कंपेयर करें, वैसे करना नहीं चाहिए, इट इज अ नॉन फॉर प्रॉफिट बॉडी, बट हाउ कैन वी मेजर द सक्सेस रेट ऑफ एन इंक्यूबेटर? देखिए इनक्यूबेटर से कौन क्लाइंट है, दे आर स्टार्टअप्स. इफ हम्म. स्टार्टअप्स आर डूइंग गुड, ग्रेट, आई थिंक इनक्यूबेटर सक्सेसफुल. हम्म. बट तो कितने स्टार्टअप्स हैं इंक्यूबेटर में, ये एक सक्सेस होना चाहिए. हम्म. कितना फिजिकल इंक्यूबेटर्स हैं, हम्म. कितने स्टाफ्स ऑफ इंक्यूबेटर है. मैंने हम्म. देखा है बहुत सारे इंक्यूबेटर में अभी भी 3-4 लोग काम कर रहे हैं. और आपको बड़ा खुशी होगा कि जो हमारा किट टीबीआई है, इसमें भी 110 एम्प्लॉयज हैं, सबसे इंडिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉय इन इंक्यूबेटर. व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज सक्सेस डिपेंड करता है कितने आपके एम्प्लॉयज हैं, बिल्कुल. कितने स्टार्टअप्स हैं, कितने वो लोगों ने प्राइवेट इक्विटी फंड रेज किया है. मान लीजिए आप हम्म. ग्रांट तो ले लेंगे गवर्नमेंट हम्म. से, लेकिन अगर प्राइवेट इक्विटी फंड नहीं रेज कर पाएंगे, ये बिल्कुल. नेक्स्ट ग्रोथ कैसे होगा. बिल्कुल. तो बिल्कुल. सक्सेस ऑफ इंक्यूबेटर also depends how many of your startup have raised how much of private equity funds. हम्म. This is also one. Similarly कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है, जैसे हमारा हम्म. केटी पे अभी तक ट्रू सेंस में 8,000 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है जो ना. स्टार्टअप्स आपके अंडर है, यस 8,000 से ज्यादा एम्प्लॉय क्रिएट एम्प्लॉयमेंट किया. क्रिएट किया. अमेजिंग. So that's very very important. These are the factors to look at the success of incubator. हाउ डू यू मेजर द सक्सेस रेट विद इन योर ओन पोर्टफोलियो? आपके जो 430 स्टार्टअप्स है, हाउ डू यू मेजर द सक्सेस रेट अमॉन्ग्स दीज? कि या तो वो ग्रेजुएशन रेट, सर्वाइवल रेट, व्हाट आर द सर्टेन मेट्रिक्स दैट यू? सो हम देखते हैं जनरली, जब हमने कभी कंपनी का 25 एम्प्लॉय हो गया है, उसका टर्नओवर थोड़ा 1 करोड़ हो गया था, हम उसको बोलते हैं तुम्हारा टाइम आ गया है, हम्म. अब अभी आप जा सकते हैं. बिकॉज हमारे पास एक समय होता है, 3 से 5 साल तक हम मैक्सिमम स्टार्टअप को होल्ड करते हैं. अच्छा, 3 से 5 साल 5 साल तक. तक, ओके. बिकॉज हमें नया भी लोग अप्लाई बिल्कुल. कर रहे हैं, वो भी आना है बिल्कुल. उनको, और स्पेस इज लिमिटेड ऑल्सो. हाँ. तो जब हम देखते हैं स्टार्टअप ना, जब ये ग्रो करता है, हम्म. सर्वाइव करते हैं मार्केट में फॉर फ्यू ईयर्स, we are not looking at only unicorns because everyone cannot be unicorn. There is no textbook language to be. ऑफ कोर्स. या. अगर ये ग्रो कर रहे हैं ग्रेजुअली और मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं फॉर कपल ऑफ इयर्स, वी कॉल देम सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस. हम्म. तो अगर देखा जाए तो आउट ऑफ 430 ऑड में से कम 170 ऑफ कंपनीज, 165 ऑड कंपनीज आर डूइंग गुड, दे आर सर्वाइविंग हम्म. in the market, they're doing business. Of course, one of them become a unicorn, and a couple of them are 200 crores companies, 100 crores company. All of them are playing an important role in startup. हम्म. तो सक्सेस को मैं इतने जल्दी मेजर नहीं करता हूँ, बिकॉज लेट देम फर्स्ट सर्वाइव, ऑफ कोर्स. ऑफ ग्रो, कोर्स. एंड देन द टाइम विल कम, सम ऑफ देम माइट बिकम अ बिगर कंपनी. आप वैसे अभी यूनिकॉर्न की बात कर रहे थे, I've spoken to your team earlier. आपके अंडर से भी शायद कोई स्टार्टअप इट इज एक नियर बाय यूनिकॉर्न या समथिंग लाइक यस दैट? यस एक कंपनी है जो फर्स्ट स्टार्टअप कंपनी के टीबीए का है, कॉल्ड फार आई. फार 3 आई. ओके. स्टूडेंट थे, गौरव, कुशल एंड गौतम. हम्म. तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया, जो किट के स्टूडेंट थे. अच्छा. तभी उनको भी पता नहीं था इनक्यूबेटर क्या है, हमें भी पता नहीं था इनक्यूबेटर क्या है, फर्स्ट कंपनी. हम्म. तो आए थे, दे वर स्टार्टिंग कंपनी का रोबोटिक यूएस प्राइवेट लिमिटेड, फिर हम्म. कुछ एक्सपेरिमेंट किए, फिर उनका ब्रांड बना फार आई.
RI company became now a unicorn. I think also last month got become unicorn listed. अच्छा, it is already a unicorn. So Amazing. ये सोचिए, तीनों बच्चे स्टार्ट की जर्नी. I don't claim कि because of KIIT TBI, but KIIT TBI was a platform for them, and that's what बिल्कुल, they also शुरुआती acknowledge. प्लेटफॉर्म तो Yes, वही yes. था. उस कंपनी हमने एग्जिट भी लिया है. The company is doing very good. It's a अच्छा, very big company now. अच्छा. So very proud of that. Amongst the 435 startups you have currently, what percent of startups would have reached at the revenue phase? Yeah, so I told you, 165, 167 companies, their revenue. They are at the revenue stage. ठीक है. So tell me something about the facility of KIIT Business Incubator. कि in order to run their operations as well as the number of startups. Number of startups आपने शायद बताया कि 80-85 startups है अभी under. इन हाउस है. कितनी बड़ी facility है ये? जो फैसिलिटी जो है 1,30,000 स्क्वायर फीट का स्पेस है. 2 बिल्डिंग है. बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2. बिल्डिंग 2 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जिसमें कि मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया है. स्पेसिफिक ऑन डिजिटल हेल्थ, हेल्थ टेक डिवाइसेस, प्रिसिजन एग्रीकल्चर, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स पे है. और जो पहले वाले इसे सेक्टर एग्नोस्टिक्स है. तो इसमें से कम से कम देखा जाए 85 और कंपनीज इन हाउस प्रेजेंट है अभी. और हमारे जो बाकी जो फैसिलिटी है, प्रोटोटाइपिंग लैब्स है. सो अगर आप आएंगे तो हमारे पास बड़े सारे मशीन से, फ्रॉम CNC मशीन, लेजर कटिंग मशीन से लेकर के प्रोटोटाइप बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग मशीन वगैरह है. तो इसको यूज कर सकते हैं. वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी. टेस्टिंग फैसिलिटी भी हमारे पास है, जो कि बड़े, आई थिंक मुझे पता नहीं किसके पास है कि नहीं, इंडिया में वी हैव द एनेबल सर्टिफाइड टेस्टिंग फैसिलिटीज. Okay. So it gives lot of edge to the startups because सर्टिफिकेशन भी चाहिए उनको, एनेबल सर्टिफिकेशन चाहिए. बिल्कुल. तो ये भी हमारे पास है. इसके अलावा डिफरेंट लेबोरेटरीज हैं, द प्लांट लेबोरेटरीज हैं. यू कैन ग्रो प्लांट्स, यू कैन प्रोड्यूस फर्मेंटर्स है, लॉट ऑफ मास स्पेक्स हैं जिसमें एनालाइज कर सकते हैं आपका जो मॉलिक्यूल्स को. इसके अलावा डिजिटल हेल्थ के स्पेस ये सब बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड काफी सारी हाँ, चीजें बायोटेक थोड़ा हैं. ज़्यादा हम लोग हैं, फोकस हैं, बिकॉज उसमें स्ट्रेंथ भी हम लोग का. लेकिन अदरवाइज बाकी भी हमारे पास, जैसे प्रोटोटाइपिंग के लिए हो गया है, कुछ कुछ हमारे डिजिटल हेल्थ वाले भी है, नॉन बायोटेक्नोलॉजी, ये भी है हमारे पास फैसिलिटीज वगैरह. How do we see the sustainable side of KIIT Business Incubator? I know that incubators operate with a different mindset कि number of startups जो success rate होंगे या mostly उन चीज़ों पे focus रहता है. But how are we on the finance side of it? कि in terms of return on investment या things like that. So हमारा जो मॉडल है, to be very honest, of course, few things given by the central government, different schemes, but हम भी अपना मॉडल्स बनाते हैं to earn our finances. So एक तो है आपका जो रेंटल से हमारे कुछ पैसे आते हैं, which is good amount. बट देन इसके अलावा हमारे पास सॉफ्ट लोन के इंटरेस्ट आते हैं. सॉफ्ट लोन के इंटरेस्ट, ओके, जो एनुअली आते हैं हमारे पास. और कुछ कुछ हमने इक्विटी एग्जिट भी लिया है. वी मेड गुड मनी फ्रॉम देयर, सो इट कम्स इन क्रोर्स. हमारा सर्विस फी है, जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, यूज करते हैं, दिस आल्सो कम्स इन वेरी गुड अमाउंट रेवेन्यूज, एंड ऑल टुगेदर दिस कम्स इन मल्टी क्रोर्स रेवेन्यूज. एनी बॉल पार्क अगर हम साल भर का समझ सके, एनी नंबर यू कैन शेयर विद अस? सो हमारा KIIT TBI जो ट्रांजेक्शंस होता है, ट्रांजेक्शंस, सो गवर्नमेंट का पैसे आता है, हम पैसे स्टार्टअप्स को देते हैं, अराउंड 40 to 50 crores हम ट्रांजेक्ट करते हैं. बट इसके अलावा हमारा जो खर्चा है, जो सैलरी वगैरह में अराउंड 7 to 8 crores जाता है, बाकी मेंटेनेंस खर्चा आता है. तो वी रेज दिस मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, आई टोल्ड यू, डिफरेंट सोर्सेज. इसके अलावा हमारे पास कुछ CSR फंड्स भी आता है, जिसको हम यूज भी करते हैं फॉर प्रमोशन, फॉर द डेवलपमेंट. इसके अलावा और भी हमारे पास है जो सक्सेस फी. फॉर एग्जांपल, आप एक स्टार्टअप है, आपके लिए हमने कुछ ढूंढा है, एक क्लाइंट, बिग क्लाइंट, और उसको हम बोलते हैं कि भाई आप ना इसका डिप्लॉय करो. तो ये डिप्लॉयमेंट फी हम लोग चार्ज करते हैं, व्हिच इज आल्सो कमिंग इन अ वेरी गुड अमाउंट. ओके. सो वी आल्सो बिल्ड आवर ओन बिजनेस प्लान टू सस्टेन. दैट्स व्हाई 2-3 लोगों से अभी हम 110 लोग हैं, एक्सपेक्टिंग कि बहुत जल्दी हमारे पास 200 एम्प्लॉइज होंगे, which will claim not only India's largest but a different growth based incubator of the country. क्योंकि उतनी टीम होगी तो उतने ज्यादा स्टार्टअप्स पे आप फोकस कर पाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. वैसे आपकी फैसिलिटी में व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ फाउंडर्स यू सी इन योर इंक्यूबेटर? बिकॉज मोस्ट बच्चों को या तो कॉलेज पे जाते ही दे गेट एन आइडिया कि भाई पढ़ाई होगी या नहीं होगी या खुद का कुछ करना पड़ेगा. व्हाट इज द एवरेज एज यू सी? हाँ, नहीं देखिए, एक तो है इनोवेटर और एक है स्टार्टअप्स. इनोवेटर्स का एज तो बड़ा यंग होता है, बट वी टॉक अबाउट स्टार्टअप्स एंड बिकॉज यू ऑलवेज सी कि आगे कैसे बढ़ के जाएंगे. तो जनरली हम लोग क्या लेते हैं, जो स्टार्ट इनोवेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, जो दे कम विद सम एक्सपीरियंस इन अदर कंपनीज. सो अगर देखा जाए तो अराउंड 25 to 30 इज आवर एवरेज एज इन आवर
incubator. 25 to 30. Yes. Very young age. Okay. The question that I have is, why should someone set up a business in Odisha? Because यहाँ पे mostly लोग aim करते हैं ना bigger markets like Bangalore हो गया, Delhi, Mumbai, Noida. तो why should someone set up a business in Odisha? या तो फिर वो सारी जो है future markets होगी. What are your thoughts? नहीं, मेरा थॉट डिफरेंट है हाँ. कि आजकल बिजनेस करने के लिए 10 years बैक इट वाज डिफरेंट thought. Today geography doesn't have meaning. Of course, if you look at Bhubaneswar now, very well connected. सो कनेक्टिविटी बढ़ गया है तो आपको भुवनेश्वर में करने में कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मिल जाते हैं, उनको ट्रेन करना थोड़ा जरूरी है. कल्चर वाइब्रेंसी नहीं था, अभी वाइब्रेंट बन गया है. गवर्नमेंट भी सपोर्ट कुछ कर रहा है और मुझे लगता है कि समबडी इज टू स्टार्ट बिजनेस फ्रॉम हियर. तो मेरे हिसाब से भुवनेश्वर ओडिशा कुड बी अ हब फॉर द स्टार्टअप्स एंड यू हैव टू थिंक डिफरेंटली. हम लोग बेंगलोर पुणे में जैसे बड़े स्ट्रक्चर्ड है, इन्वेस्टर्स हैं, वो नहीं है यहाँ पे. लेकिन आहिस्ते आहिस्ते बेटर होते जा रहा है. एंड वी ऑल्सो आपने बताया खुद के 30 इंक्यूबेटर्स हैं. दे हैव ऑल्सो बिल्ड ए क्रिटिकल मास ऑफ स्टार्टअप्स. तो वहाँ क्रिटिकल मास बन चुका है एंड नाउ डूइंग बिजनेस फ्रॉम उड़ीसा विल नॉट बी ए प्रॉब्लम फॉर मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज. Startups की हम बात कर रहे तो one question that I would like to ask is, what are the reasons according to you why startups fail? Now it is a very common question. सब अपने अपने तजुर्बे से जवाब देते हैं. But as आप incubator head कर रहे हो, आपका unique first hand experience है with the startups. So what are some of the reasons you see why startups fail? See, startup fails. Many cases I know knowingly they fail. In the sense, they don't focus on team. So it means we always tell them, please focus on team. So they know team is important, but they fail because they don't focus on building a right team. Second, the managing relationships. I have seen companies where two founders fight and they close the company. The company was doing good. It's an ego issue. So they thought they are doing great job and each one of them are very, very important, headstrong, and they have to close down the company. So it's a relationship management. Soft skills management. बहुत common है ये very चीज common. जो These are बता missing रहे among them. The ideas are very good. They're doing good business, but because of this they fail. So they are knowingly they're failing. सही Okay? बात They are है, not सही बात controlling है. their anger, ego, and all. So third thing is the business strategies, because they keep on focusing on technology, and they're not coachable. So non-coachable people they Non fail. coachable मतलब? Means you tell them they are not listening to you. Okay, They okay. always do what they want to They are do. rigid. वो Very सुनते नहीं rigid. हैं. They are not coachable. They will not listen to you. They will all say yes, but at the end they will do what they want to do. It's a very bad habit of So entrepreneurs. investors I must comes say. in. Everybody says, okay, why don't you do like this? They say yes, but they don't do it. They think what they're doing is great. Now these are very peculiar characteristics among our startups, and because of that they fail because there is no growth बहुत सही plan. बात है. With business plans also missing. They can't talk about technology plan. There is no business plan. We tell them bring business plan, but hardly people go and do the homework, come back with the right business plan. They are not on the ground. They are on in the offices, laboratory, thinking about big business. They have to do असली market काम तो research. ग्राउंड वर्क Yes, पे ही उसी में तो होता होना है. है. बिल्कुल. मार्केट में फिटमेंट हुआ कि नहीं, थोड़ा फीडबैक तो ले लीजिए. अच्छा, आपका जो मेंटर्स हैं वो तो वेरी बायस्ड हैं, वो अपना बताएंगे. वे टू रीच आउट टू अदर्स एंड फाइंड आउट कहाँ पे मैं फेल हो सकता हूँ. सो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, दीज आर मिसिंग अमंग स्टार्टअप. तो ये नोइंगली दे फेलिंग. सही सब बात पढ़ाते हैं ये चीजें हर एक जगह पे. हमारे तो हमेशा ही मास्टर क्लास चलता है. दे ऑलवेज अटेंड. एट द एंड दे डोंट प्रैक्टिस. सो आई ऑलवेज टेल देम नोइंगली दे फेलिंग. सो अगर पूछेंगे ना हमारे 430 में से 168 और समथिंग क्यों अच्छे कर रहे हैं, बिकॉज ये हमने उनके प्रोसेस थ्रू में लेके गया है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दे शुड अंडरस्टैंड टीम इज इम्पोर्टेंट, बिजनेस इज इम्पोर्टेंट, स्ट्रेटेजी इज इम्पोर्टेंट, मेंटर्स आर इम्पोर्टेंट, वी शुड हैव सॉफ्ट स्किल्स. दीज थिंग्स आर वेरी इम्पोर्टेंट. सही बात है, सही बात है. वैसे अगर हम देखें तो व्हाट आर योर इंस्पिरेशंस, अगर हम एनी टॉप इंक्यूबेटर फ्रॉम इंडिया या ग्लोबली जो कि आप काफी करीबी से देखते हैं, स्टडी करते हैं उनके तरीके, हाउ दे ग्रूम अ स्टार्टअप, हाउ दे इन्वेस्ट इन एन आइडिया, व्हाट आर सम ऑफ योर इंस्पिरेशंस? ये हम जैसे जाते हैं बड़े बड़े जगह पे जाते हैं, सिलिकॉन वैली जाते हैं, वाई कॉम्बिनेटर जाते वाई हैं, कॉम्बिनेटर, तो वो प्रोसेस पूरा सेट है. तो बंदे को पता है कि अगर मैंने इन कर लिया कुछ तो बनेगा इसमें. बिल्कुल. वो चीज इंस्पायर करता है बिकॉज वहाँ पे डिफरेंट सेटअप लोग रहते हैं एंड थिंग्स हैपेंस वेरी फास्ट. हमारे यहाँ पे क्या है कि थोड़ा अलग किस्म का है. बट हाउएवर लुकिंग एट past 10 years experience in our areas, I could see a lot of new things are happening here. So कभी मान लीजिए कोई बंदा आता है
जैसे आप वाई कम्युनिटी जाएंगे, सिलिकॉन वैली में जाएंगे, Mhm. दे क्रिटिसाइज यू टू द फुलेस्ट, Okay. बट दे वांट यू टू बी द बेस्ट. Mhm. So many places they criticize the fullest just to kill you. सही बात है. So I think that people, inspires me कि you criticize somebody and make them so strong that they will really rise. In our case, we have done that with many startup companies that were Mhm. very bad with them in terms of mentorship and knowledge. See, this is what we really grill them. Mhm. But today they talk about us. कि sir, this was तभी the वो best thing. स्ट्रांग होंगे Strong और हो क्या, जाएंगे. क्योंकि सारी सर्विसेज, सारा सपोर्ट तो मिल जा रहा है, उनको भागने की जरूरत कहाँ आपको पड़ी कहीं समझना पे. पड़ेगा कि ये स्टार्टअप्स को ना फास्ट ट्रैक सर्व करना पड़ेगा. अगर आज कोई जरूरत है, आज ही करना है. सही As a बात. professor, I can tell them you come tomorrow after 5 days. As an हम्म. entrepreneur enabler, enterprise enabler, I have to tell come now, इमीडिएट है वो. immediately. तो ये एक फास्ट ट्रैक हम्म. होना चाहिए. What are some of the hard realities you see in Odisha? अगर आप local market observe करते हैं, what are the problems or what are the hard realities you see In terms of business, in terms of business, in terms of startups? हमारे यहाँ पे थोड़ा जो if I look at the startups, the business plan, हमारा growth plan is not told. So when I talk to startups and all, they always talk very happy with small things. सर हम्म. मैंने 3 लाख कर लिया, 5 लाख कर लिया. They not don't look at the bigger market size. This हम्म. is the hard reality because बड़ा they नहीं सोचते. बड़ा नहीं सोचते हैं, many of them. हम्म. एंड मैं बोलता हूँ देखो, मैं हम तो बड़ा सोच रहे हैं, इनक्यूबेटर कैसे बनेगा, उसके ऊपर बनेगा. आप तो बहुत बड़े बन सकते हैं बिकॉज यू हैव ए राइट प्रोडक्ट विथ यू. तो ये हम्म. चीज़ बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स विथ आवर स्टार्टअप्स कि दे डोंट थिंक अबाउट बिगर थिंग्स हैपनिंग. सेकंड जो ना बड़े ग्रुप को रखना साथ में, ये भी उनका स्किल्स बड़े कमी है कि मान लो आई वर्किंग विद 50 पीपल, हाउ कैन यू मेक इट 100 200, हाउ कैन यू कीप देम टुगेदर फॉर ए और वो लॉन्गर. सोचना कि सोचना 50 100 200 लोगों को आप रिक्रूट करोगे अपनी ये चीज़, कंपनी ये उनके में. माइंड में नहीं रहता है. वो 2 4 में चला लेंगे, थोड़ा शॉर्टकट ले लेंगे. तो ये चीज़ भी आपका बड़े-बड़े ना में देखने को मिलता है. बिल्कुल बट जब आप बिल्कुल. बाकी जगह पे जाएँगे बैंगलोर में, ये नहीं है. वहाँ पे थोड़ा बड़ा हम्म. स्ट्रक्चर्ड है बिकॉज़ दे हैव ट्यून्ड टुवर्ड्स दैट. So I हम्म. think I'm not saying complaining about it, but नहीं it नहीं. is evolving startup बिल्कुल. ecosystem Odisha, and it हम्म. has really went fast track. And today I'm very happy नहीं है that ना ये चीजें भी हाँ इनके लिए, नई सो. चीज़ें हैं. तो आपको समझना पड़ेगा. स्टार्टअप्स भी बिल्कुल. काफ़ी स्मार्ट हो रहे हैं. हमारे काफ़ी उड़ीसा में स्टार्टअप काफ़ी नॉइज कर हम्म. रहे हैं इन द ग्लोब. From a macro perspective, commerce revolves around the movement of money between different entities in exchange of goods, service or time. ये यूजुअली एक बिजनेस और एक कस्टमर के बीच में होता है, एंड दिस इज द बेस्ट मनी मूवमेंट पॉसिबल. Another key money movement that we observe in the startup segment is the bet that venture capitalists make on potential startups. They invest in 100, but the success of 3 to 4% pays for the losses incurred on the rest. So, how do you see venture capital and this money movement, which focuses on betting on the future of an industry or maybe customer acquisition or future business expectancy? So, what are your thoughts? देखिए, इन्वेस्टमेंट बहुत सेक्टर से आता है. सो कुड बी फ्रॉम एंजल से आता है, बैंक से आता है, फैमिली से आता है, चेन्नई से आता है, लेकिन गवर्नमेंट से भी कुछ आता है. Mhm. बट इसमें आप कितने दूर जा सकते हैं? अगर आपको रियली ग्रो करना है, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड की ज़रूरत है, जो Mhm. भी इंडिया में तो काफ़ी ये ज़रूरी है बहुत जो. ज़रूरी है. मुझे तो पता है कि बिकॉज़ अगर आपको बड़ा होना है, हुँ. वीसी फंड इज़ इम्पोर्टेंट. एंड यू जस्ट लुक एट द स्टोरी ऑफ ऑल बिग कंपनीज, दे हैव रेज़्ड वीसी फंड्स. बिल्कुल, बिल्कुल. नाउ ये फंड कोई ईज़ी फंड नहीं है, बिकॉज़ दे आर आल्सो स्मार्ट प्लेयर. सही बात सो है. दे बिल्ड अ पाथ फॉर यू, दे कम एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स फॉर यू. तो ये वीसी फंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूरी है कि एक कंपनी जब ग्रो कर रहा है, उसको वीसी फंड के पास जाना चाहिए. हुँ, तो हुँ. डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वीसी फंड्स वो लेते हैं, हुँ, सीरीज के हुँ. हिसाब से लेते हैं. हुँ, और हमारी जैसे कंपनी है फार आई, ये तो कम से कम 1080 करोड़ रेज किया है फ्रॉम वीसी फंड्स. इमेजिन कौन आपको क्रेज़ी. 1080 करोड़ रुपए देगा. तो ये वीसी फंड की बहुत ज़रूरी है इसमें अगर आपको ग्रोथ करना है. हुँ, तो हुँ, ये हुँ. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अर्ली स्टेज में अगर आप देखेंगे तो हुँ, गवर्नमेंट का हुँ. फंड, एचएनआई फंड, ये सब फैमिली फ्रेंड्स हुँ, आते हैं. हुँ. बाद में तो आपका एंजल फंड आता है. उसके बाद लास्ट में जब सीरीज रेज करते हैं, हुँ, ये हुँ. सारे वीसीज होते हैं. कोई एचएनआई एंजल जितना पैसे देगा नहीं. ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ कोर्स. तो ये चीज़ ग्रो करने के लिए आपका, सो आई कॉल वीसी एज ए ग्रोथ फंड. ओके, ओके. ज़रूरी है ये जरूरी चीज़ है, काफ़ी. वेरी वेरी जरूरी है. और भाई इंडिया में अच्छा हो रहा है, टेक्नोलॉजी बेस्ड वीसी फंड आ गए हैं भाई. हुँ, और हुँ. हमारे पास आते हैं हुँ, कि हम हुँ. ओरल कैंसर स्क्रीनिंग वाला डिवाइस ढूंढ रहे हैं. वेरी स्पेसिफिक कि हम ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारा फूड में करेंगे तो हुँ, ये हुँ. चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है हमारे स्टार्टअप ऑफ इंडिया के लिए. काफ़ी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इंडिया से और फॉरेन में भी, फॉरेन से. हुँ, हुँ. हुँ.
In the West, we have seen things go wrong in startups like FTX, WeWork, and Theranos, where founders chase a dream with a venture capital fund. We also saw few Indian industrialists who chased their verticals with bank loans but somehow couldn't deliver their vision. What advice would you give to founders who are chasing their startup dream with a blind belief or a gut feeling that is bankrolled by these financial institutions? कि मैं तो बोलूँ पहले जो स्टार्टअप्स को पहले एडवाइस है कि दे शुड फर्स्ट फोकस ऑन द प्रोडक्ट प्रोसेस व्हाट दे आर डेवलपिंग और द सर्विस Mhm, वो स्ट्रांग होना चाहिए एंड मनी को चेंज नहीं करना चाहिए पहले सो mhm, नाउ आई नो इन द यू सेड ना 100 में इन्वेस्ट करते हैं 3 को सक्सेस होता है अगर मनी चेंज सो मोर विशेज आर देयर नाउ इन द मार्केट mhm, you should not look for them. They will find out you. But you should create the right kind of noise with the right kind of products in the market. अगर इसमें आप ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे इन्वेस्ट करेंगे रिसोर्सेज टाइम तो आपको ज़्यादा आगे जाएंगे जो कंपनी का आपने नाम बताया mhm, I don't say they have taken a wrong path, but mhm, maybe we can do much better than this. So, suggestion to startup: they don't chase for money at the moment. mhm, Build your product so strong that they are going to find out. I have seen that people are writing to us, "Sir, we want to come to your facility with their own money to mhm. invest on your startups." It means some of them are doing good. So सही make बात that है. good noise in the ecosystem. People are watching you. So I was watching an interview of Ritesh Agarwal where he spoke about delayed gratification in terms of personal financial gains or returns by cashing it quite early. कि अभी liquidate नहीं करेंगे, आगे जाके we'll see. But then there's one category of founders that we see who see their brand as a commodity and try to cash it early. Not that it is wrong, but what are your thoughts? There are two type of people. So I'm not commenting on any one of them. There are many people they build products, bring it to a level, and then sell Mm-hmm. it off. That's Mm-hmm. the business plan. But everything is fair in all this business of startups Mm-hmm. because I always look for opportunities. Now, today I see you as investors. Pitch. I provide a pitch to you, and you're very impressed. Mm-hmm. So maybe you didn't look at me very critical way. So you Mm-hmm. invested on me. Mm-hmm. Now that's also my plan because I'm looking for investments. Of course. So how smart you are is important for your side, but how smart you are, I am is important for my side. So I think three different things. One is Mm-hmm. a business plan where people develop, keep on developing things. They don't want to build their own enterprise. They want to sell it off. Tech transfer, commercial strategies, licensing out. They make good amount of money, Of multi course. Not crores. that it is wrong, of course. बिल्कुल बिल्कुल. That's also part of it. Because they Mm-hmm. cannot do business in one. They are developers. पर इसमें होता क्या है कि अगर आप शुरुआत से ही वो मेंटालिटी है कि स्टार्टअप बना के बेच देना तो यू विल बिल्ड दैट काइंड Yes, ऑफ स्टार्टअप yes, ओनली yes, yes, yes. यू नो बट अगर आप लॉन्गर विजन से रन करोगे लॉन्गर विजन से बिजनेस बनाओगे तो यू So एंड अप अलग बिल्ड है. So they're also important. Both are all are बोथ important. आर At the इम्पोर्टेंट ऑफ end, कोर्स. if transactions happening, employment is created, investment happening, who is doing this doesn't matter. It's बिल्कुल happening. That's बिल्कुल what I think. बिल्कुल. Odisha has a thriving gig economy with a growing freelance workforce. Freelancing in their respective industries can give them the experience and the skills to operate on an individual scale. पर अगर हम लॉन्ग टर्म करियर की बात करें तो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द फ्रीलांसिंग इकोनॉमी कि या तो दे शुड थिंक अबाउट इनकॉर्पोरेशन एज अ बिजनेस या फिर दे शुड लुक आउट फॉर की रोल्स इन कंपनीज because they are somewhere in the middle right now. So what are your thoughts on this and how should they move forward? So I Odisha. think I love this because startups they cannot afford to have full time. Mm-hmm. Now they look for freelancers. So we have seen several people from different sectors. They come and work with a startup, Mm-hmm. very temporary way, which is important. So and they're well paid because they get paid per बिल्कुल hour per day. So it's very good for them. बिल्कुल. Now it all depends on the person who runs such kind of freelancing activity. But I'll Mm-hmm. say, okay, if you see there's a scale, you Mm-hmm. can start your own enterprise in those sectors, and from branding to all media sectors, even Mm-hmm. startup needs to brand them because there's a very big problem with the startup. They never brand them properly in a Mm-hmm. structured way. They Mm-hmm. brand in a very mediocre way. So branding in mediocrity is not going to सही बात है. benefit. I सही think बात this है. freelancing activity could take up a structured business houses if they Mm-hmm. see there's a scale in a particular region, or many of the Mm-hmm. digital could be offline, online. They can be Mm-hmm. done from anywhere.
My last question is, how can startups and budding entrepreneurs connect with you or connect with your facility or team? कैसे connect कर सकते हैं आपको? Very simple. You Google KIIT TBI and you get Mhm. the website. Everything is mentioned. The email, the Mhm. how do you get reach out to us, mobile numbers. So once you send an email to us Mhm. and this TBI at KIIT, somebody is going to talk to you and respond to Mhm. your email or call you back. And it's very popular at the moment. And I think. But it was really amazing talking to you, sir. Thank you, thank you, thank It you. was really nice having you Nice here. talking to you. Thank you, thank Thank you, you, thank thank you you, so thank you. much.